Okay, thank you. So what we discussed in the last class? Yes, Bharti, we discussed Neelam Valley. And what was the specific thing that we learned about um, in this text? Yes, about the description of the Neelam Valley. Good. About the describing words, right? Adjectives. So I gave you some homework. I'm sure that many of you are done with your homework. Yes, ma'am. Good. Shazay, very good, very good. Okay. Please, if anyone want to share the homework, let me know if you want to share your homework. गुड आयशा, ठीक है, आप कर लीजिए। मैं अभी आपको प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आयशा। पापा करंट लगा। अरे पापा करंट लगा। मैम आपने अपने होम टाउन के बारे में लिखने के लिए बोला था सेंटेंस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था कि उसमें आप वो 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव जरूर यस नोट मैम। करते हैं जो आपने हंट किए हैं। तो पहले तो बताया मुझे, आपने हंट किए उस टेक्स्ट में से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स? जी मैम। ठीक है, शाबाश। आप अपने होम टाउन के बारे में बताएं मुझे। यस मैम। मैम माय होम टाउन इज घोटकी and Ghotki is the city of Sindh province and undoubtedly Ghotki is second number of more pair tax after Karachi. And second one is Ghotki is famous for delicious sweet is peda. Famous, delicious. Okay, so these are adjectives that you are using. All right. Yes. Proceed. And many enchanting places which are Circuit House, Momaji Mari. It distance about 8 miles from Ghotki and second one is Shahi Bazaar, Jamia Mosque and many restaurant in Nardi Ghotki district. And third sentence is Ghotki district has a vast field of natural resources such as agrochemical, Fuji fertilizer, sugar mills and oil gas which is basically known as OGDCL. And the land of Ghotki is mostly fertile and produce various crops like sugarcane, wheat, plantation of mangoes and cotton. And number fifth is unfortunately the infrastructure is very weak of the Ghotki district. The access road is in poor condition. And the sixth point is health and educational facility for public are also not good in manner. Ma'am, that's it. वेल डन आयशा, वेल डन, गुड। तो हमें आज घोटकी के बारे में पता चला कि घोटकी कैसा है, उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। समवन एल्स शुड शेयर अबाउट any other than घोटकी? Yes, Baba, participate. I gave you this homework to write a few sentences about your hometown and then share some specialties using different adjectives about your hometown. So please participate, be active. Who's coming next? एक और है हमारे साथ, अब्दुल जब्बार, वो भी घोटकी से हैं। तो we need some other district, some other hometown, different one.
So I'm waiting for you, please. Participate. I'm noting down the names, those who are participating in the class. No one is coming next? Acha. Okay. Let me share the screen now. Can you see the screen? अब सब जवाब देंगे, मुझे यकीन है। और पहले खामोश बैठे थे। हाँ जी, अब्दुल करीम, अब जवाब दिया है। पहले पहले कहाँ थे जब मैंने आपको कहा कि होमवर्क दिया है मैंने, तो वो होमवर्क पढ़ें। चलिए, किसी की भी रिस्पांस नहीं आ रही, देखें एक दो स्टूडेंट्स है जो रिस्पांस कर रहे हैं, तो अगर इसी तरह चला तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। ये होमवर्क था, मैंने आपको दिया था कि आप एक तो हंट करें, एडजेक्टिव्स हंट का, एक्टिविटी 2 एडजेक्टिव्स हंट, कि जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है आप उसके एडजेक्टिव्स जो है वो हंट करें। और दूसरा था कि उसी 5 to 7 सेंटेंसेस अबाउट योर होम टाउन, और फिर उसमें एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव्स और यूज करें जो आपने एडजेक्टिव हंट लिस्ट में नोट किए हैं। And the next that we are going to discuss is, and this was one of the homeworks, that you have to fill these blanks with adjectives that are used in the text, that are not used in the text, but you have to use the different adjectives, right? तो ये भी आप लोगों ने होमवर्क किया है, नहीं किया है, that would be part of your exams, by the way. अब आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे, ये आपका मसला है, आपको बहुत नुकसान होगा इससे, मैं बता रही हूँ। और जो जो काम करके आ रहे हैं, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम नोटिंग डाउन देयर नेम्स। गुड आयशा, वेरी गुड, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। So coming to the next text, which is about obtaining and giving information. Now here you have to listen to it carefully. Like in the previous text, we were talking about how to describe things. And for describing things, we need to use adjectives and describing words. Right? This is what we learned in the last text. But here, the main focus is on the listening skill. You have to listen, right? And then after this text, I'll be giving you some exercises that would be based on your perfect listening of this text. This is a very short text. It's about obtaining and giving information. But before moving to the text, let me tell you that there are 3 sentences that we need to discuss. Number 1 is iPhone with portable internet access is fantastic. What are your opinions about it, whether you agree or disagree? You please note them down in your notebook and discuss in the next class. Number 2 is Facebook is simply amazing. So do you agree or you disagree? What are your opinions about it? Number 3, online banking is incredibly helpful. So all these things
is Kavir Das. So why you were quiet when I was asking you for homework? अभी आपने जुमलों में नहीं बताना है, पहले आपने बताना था उस वक्त. चलें, तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, आप इन पे अपने अपने ओपिनियन दें मुझे नेक्स्ट क्लास में. अब 2 स्टूडेंट्स आगे आए, एक फातिमा बने और एक आयशा बने. फिर जो फातिमा का डायलॉग है वो फातिमा वो बोले, और जो आयशा का डायलॉग है वो बोले जो आयशा का रोल करे. तो कौन आप में से कौन ये टेक्स्ट रीड करेगा? फातिमा और आयशा के डायलॉग. ओके करतुलैन, आप हो जाएं फातिमा. आयशा, आर यू देयर? यू शुड बी Aisha. Aisha is there for being Aisha. Good. So we have Aisha. And Kuratulan, you are Fatima, right? Let me unmute you too. Kuratulan, please check if you can unmute. Yes, you are done. Now, Okay. Aisha. Fatima, hey Aisha, why didn't you come to college yesterday? कुरतलन, आप थोड़ी देर खामोश हो जाएं पहले. जब मैं आपको बोलूं रीड करने के लिए तब आप बोलें प्लीज. Okay. जी, तो सबसे पहले तो है वो फातिमा का डायलॉग है, वो फातिमा बोलेगी. फातिमा आप अपना डायलॉग बोल के फिर खामोश हो जाएंगी, फिर आयशा अपना डायलॉग बोलेगी. बाकी जो स्टूडेंट्स है वो गौर से सुनेंगे इसको. दिस एक्टिविटी इज ओनली टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल. यू हैव टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज उसके बाद मैं आपको जो एक्टिविटीज दूंगी वो आपके लिसनिंग पे बेस्ड होंगी कि आपने किस तरह गौर से सुना कि नहीं सुना. अच्छा, 1 मिनट मुझे दे दें. Okay, so we are starting. Fatima, start. Fatima, hey Aisha, why didn't you अच्छा come? फातिमा, आपने नाम नहीं लेना है ना अपना, आपने नाम ले लिया. यही आपको आपको आप लोगों को सीखना चाहिए कि जब when you are reading the dialogues कि आप फातिमा हैं, आपको फातिमा का डायलॉग पढ़ना है. तो आपने अपना नाम नहीं लेना. जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप करो तो लेना, आप कुछ बोलेंगी तो आप पहले करो तो लेना बोलेंगी, नहीं बोलेंगी ना. तो इसी तरह ये आपका डायलॉग है, आप अपना नाम ना बोले, बस अपना डायलॉग बोले. जी. Okay, now I understand. Hey Aisha, why didn't you come to college yesterday? Oh, Fatma, I was up late the night before, so I could not come. Actually, my mother had to talk to my sister in America on Skype. You know, it's almost 10 hours time difference, so I could not sleep well. That's why I did not come. Oh right, isn't the internet great? But my mother doesn't like it. She says people waste a lot of time on the internet. That is why I don't have it at home. Fatma, I think you should talk to your mother about having it at home. She is right that people waste time on the internet, but it depends on how you use it. Yes, I know, but she says that young people now keep chatting online with their friends all the time. Not at all the time, and anyway, apart from chatting online, I use it for so many other reasons too. You know, I search on the internet and find a lot of related ebooks and article on subject we are studying. There is so much information. There are on many websites. That's great. What else do you use it for? Well, I use internet for watching TV serials, sports and news, and Facebook and Twitter are wonderful way of connecting with friends all over the world. Amazing. Could you see it to give me some help in doing an assignment? Of course, what do you need? Some material for the assignment on psychology. Don't worry at all. I have already found a lot of stuff on that topic. We can study together this evening. Okay, thanks a lot. Very well done. Well done, Prathalan. Well done, Aisha. Very well done. Very well done. So it was to talk about the usage of internet, right? And 2 friends were talking together about why one of them was absent in college, and then she told that her mother was talking to her sister America on Skype. So that's why she got late. All right. So this text
नाउ अब मैं आप लोगों में से किसी से पूछूंगी ये सवाल. हाँ, समन प्लीज. आयशा और पुतलिन, आप अपने आप को म्यूट कर दें प्लीज. Yes, ma'am. Now tell me in the chat box, all of you students, Aisha is talking about what? Okay, Ma. Aisha was talking about advantages of internet. Fatima is talking about what? Good, Bharti. Fatima is talking about what? Okay, assignment, good. और तो पहले उन्होंने क्या बात की? Disadvantages of internet, yes, for the major part. Disadvantages, okay. Fatima was talking about disadvantages of internet because her mother didn't like internet. She thinks that people waste a lot of time on internet. Good. Yes, Khadija. शाबाश, तो आप लोगों ने ठीक से सुना. Internet is not good for young generation. Yes, Aisha. Okay. Yes, Sayyida Madhur. So this was about all. Now you have to tell कि कौन सा वर्ड किसने अपने डायलॉग में यूज किया. जैसे कि नंबर 1 है स्काई. ये किसने यूज किया था? फातिमा ने या आयशा ने? जल्दी बताएं, जो जल्दी बताएगा वो विनर है. नॉट बोथ, नॉट बोथ. ये आयशा ने यूज किया था. तो देखिए काफी स्टूडेंट्स गलत जा रहे हैं. कोई कह रहा है बोथ, कोई कह रहा है कि फातिमा ने यूज किया था. अदर इट वाज यूज्ड बाय आयशा. ओके. नंबर 2 इंटरनेट. ये किसने यूज किया? बोथ. ओके. चैटिंग ऑनलाइन. ये वर्ड किसने यूज किया? बोथ. फातिमा, आयशा. देखिए सब गैस कर रहे हैं. हाँ. इसका मतलब है आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं. ई बुक्स, वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर, असाइनमेंट्स. ठीक है भाई. तो ये भी आप देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी 2 इंटेंसिव लिसनिंग. आप लोगों ने इंटेंसिवली लिसन करना था कि कौन सा वर्ड कौन यूज कर रहा है. ठीक है. अब आते हैं हम इन सवालों की तरफ. There are 5 questions and they are very important. Number 1 is, why didn't Aisha come to the college? कौन बताएगा मुझे? Yes, because the mother was talking to her sister on Skype in America. Okay, okay, good. Because his mother chatting with the sister on Skype. Okay, okay. Number 2, why does Fatima's mother dislike internet? Because she thinks that people waste a lot of time on internet. Yes. Good. Okay, number 3. Apart from chatting, Aisha talks about what other uses of internet. Apart from chatting, what are other uses? Okay. We can search anything about studies connected with whole world or websites. Good. Because people waste a lot of time. Good. Okay. Good, Mohammed Rafi. Good. Okay.
What are two ways mentioned by Aisha for connecting with friends all over the world? Facebook, Twitter. Okay. So we can connect all over the world. Good. Number 5. What does Fatima ask Aisha to do towards the end of the conversation, and what is Aisha's response? ये बताओ मुझे. Fatima asked Aisha, could she use to give her some help in assignment? Okay, Mohammed Abad, good. About assignment, okay, Karatulan, okay, Ghulam Mustafa, good, शाबाश. तो ये हो गया सवाल जवाब का. अब ये 4 पॉइंट्स हैं, आपने ये फिल करनी है कि आप अभी भी बता सकते हैं मुझे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, other advantages other than used in the in text. ओके जी, और क्या एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के? We can search anything. Okay, we can easily communicate. Good, Mohammed Afif, good Shaka. And Sayyid Manu says, because of the internet, we are able to take class. Yes, that's very good. Because of the internet, we can take class. और अगर इंटरनेट नहीं होती तो हमारी क्लास भी नहीं होती है ना. हाँ जी, many things you can understand. Online class, yes, online class, we can connect with people all over the world. We easily communicate. शाबाश, okay. तो ये 4 पॉइंट्स आपने फिल करने हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंटरनेट की. ठीक है.